Welcome to in my channel, and in this classes I explained law of motion, and I am also giving the notes of the laws of motion. First we discuss about the force. A force is a push or pull that can change the shape, speed or direction of an object. So this is the force. जो फोर्स होता है पुश और पुल करता है जिससे शेप चेंज हो जाए, स्पीड, डायरेक्शन, तो ये फोर्स हुआ. ना न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एन ऑब्जेक्ट रिमेन एट रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन. अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में हो या फिर यूनिफॉर्म मोशन. व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. जब तक उसे कोई बाहर का एक्सटर्नल फोर्स ना लगा दे तो उससे कहते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. एंड दिस is also called the law of inertia. Now what is inertia? Inertia is the tendency of an object to resist any change in state of rest or motion. जब टेंडेंसी कोई भी ऑब्जेक्ट का होता है जो रेसिस्ट, जो आराम होता है, रेसिस्ट एनी चेंज इट्स चेंज ऑफ रेस्ट और मोशन. नाउ टाइप्स ऑफ इनर्शिया, दीज आर द टाइप्स ऑफ इनर्शिया: inertia of rest, inertia of motion, inertia of direction. Now come to the next law. Generally Newton's have three law. First law I also discussed you. Now second law of motion, the rate of change of momentum of an object. The rate of change of momentum of an object is directly proportional to the applied force. The rate of change of momentum of an object is directly proportional to the applied force and occurs in the direction of the force. F equal to ma. Now momentum. What is momentum? Momentum is the product of mass and velocity. P equal to mv. Now come to the next one, Newton's third law of motion. To every action there is no and equal opposite and direction. For every action there is an equal and opposite reaction. Now law of conservation of momentum. If no external force acts on a system, the total momentum of the system remain constant. अगर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे नहीं लगता है, जो टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम होता है, जो रिमेन जो रहता है, कांस्टेंट रहता है. कांस्टेंट मीन्स स्थिर. So this is the law of the motion I discuss in this class, and in next class I gave you the notes of the work, energy and power. So that's all. Thank you.